आइए बात करते हैं हम अक्षरा से। हाय अक्षरा, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। Hi, thank you. अक्षरा, यू आर वर्किंग विद बिग बी इन शमिताब, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका शमिताब में काम करके बिग बी के साथ? पहले मैं बहुत ऑनर्ड हूँ और बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस था और मुझे और भी पिक्चर करनी है उनके साथ क्योंकि बहुत सारा है सीखने के लिए उनसे। तो बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है पूरे टीम के साथ। तो फ्यूचर में वापस उन सबके साथ वापस काम कर सकती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। अच्छा, यूजुअली इट इज सेड दैट बिग बी इज द वन हु प्लेज प्रैंक्स ऑन द सेट्स, तो कभी अक्षरा के साथ ऐसे कुछ प्रैंक प्ले किया उन्होंने सेट पर? वक्त ही नहीं मिला हमको नहीं तो मैं भी टांग खींचती थी मगर टाइम नहीं मिला क्योंकि हम बहुत फोकस थे सीन में और क्योंकि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत चैलेंजिंग हैं और बाकी सर हमको चैलेंज देते ही रहते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो और भी मेहनत डाल सकते हैं। तो हाँ, जैसा कि आपने कहा अगर मौका मिलता तो आप बिग बी की टांग खींचती, सो अगर मौका मिलता तो कैसे होता वो? मालूम नहीं, वो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कर लेती मगर 10 बार सोच के करती है। कभी ऐसे मतलब सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि यू नो लाइक बिग बी ने कभी अपनी सीनियरिटी दिखाई दैट ओके नो आई एम योर सीनियर, यू विल हैव टू डू दिस? कभी नहीं, वो कभी नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो ऐसे हुआ ही नहीं, ऐसे कभी नहीं लगा कि अच्छा वो बहुत सीनियर है। ऐसे उनका वो इतना he made me feel so comfortable and it was amazing. He never threw his weight around at all. He's like any other newcomer. He's working as hard as a newcomer like it's his first film. Were you nervous on the first day of the sets, on the sets when you were working, when you got to know that you're gonna work with Amitabh sir? So were you nervous? I was nervous, yes, because I didn't want to mess up or do anything wrong because like if you do something, I might feel like if I do something wrong, oh, he's not going to think of me very well. But he won't. It's just a fear I had, which is quite ridiculous, you know. But I was like really making myself really nervous. But then he saw me as me and let me be me, and he gave me the freedom to perform. So that meant a lot to me, and everybody did. So it meant a lot to me. It's like a dream debut, as in, you know, working with Dhanush and Amitabh sir. So what do you have to say about that? I'm so thankful for getting this. I could not have asked for anything better. It's been such an amazing, special experience. Okay, so your mom, your dad, in fact your elder sister as well, they've made a mark in Bollywood. So कितना pressure था अक्षरा पर Bollywood में अपना कदम रखते हुए? नहीं था actually. They actually let me be who I wanted to be and the actor that I can be. So I didn't feel any pressure from their end at all, and I got to be who I wanted to be and give my 100% as Akshara. So were there any tips given to you by your family, by your parents or by your sisters? It was more of questions that I asked them and they clarified for me, because there are a lot of questions that you have when you enter any sort of industry. So you would obviously turn to your family or your seniors. So they did guide me and tell me this is like this, and why it is like that. Now, and that helped me make a decision. So, okay, tell me, धनुष के साथ आपकी इस फिल्म में बॉन्डिंग, मतलब ट्रेलर में जैसे हमने देखा काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है. So like क्या आप दोनों पहले से फ्रेंड्स थे या सेट पर आके दोस्त बन गए, more professional friends, and like see we were focused on our scenes and he helped me as my co-actor to be able to perform as much as I can. So everybody did. So yeah, it's been yeah. As a producer, tell me, Abhishek Bachchan कभी set पर आए थे? Did he ever tell you something? No, I didn't see him on the days I was shooting on set. So yeah. Okay, and we have come to know that Akshara is a big fan of Shah Rukh Khan. Oh, we can make that out from a blush. So anything like अगर future में Shah Rukh Khan के साथ film करने का आपको मौका मिले, तो you would like to do a romantic film or an action film with him? See, if you ask me to do a romantic film, my दिल garden हो जाएगा. I can't focus on my scene, you know. But I would love to
do any kind of film that works out when, if he's in the film, if it works out that opportunity, I would love to. So then one dialogue for Shahrukh. उनकी किसी फिल्म का एक डायलॉग शाहरुख के नाम. Personalized? Okay, personalized. ठीक है, fine. So I really love you, so I'm a huge fan. That's so cute. Okay, and कुछ कहना चाहेंगी अपने फैंस को? मतलब 6 फेब को फिल्म रिलीज होने वाली है, अक्षरा के इतने सारे फैंस बनने वाले, इनफैक्ट ऑलरेडी हो गए हैं, so उनको कुछ कहना चाहेंगी? Thank you everybody for liking me. It's encouraging. And please शमिताब को देखिए, 6 फरवरी को रिलीज हो रही है. I hope you enjoy the film. It's unique, refreshing, and yeah, I hope you enjoy the film. डेफिनेटली 6 फेब को थिएटर्स में जाके शमिताब ज़रूर देखिए, क्योंकि अक्षरा, अमिताभ जी एंड धनुष की काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है. दिस इज प्रेरणा विद कैमरामैन फैजान फॉर बॉलीवुड नाउ. Hi, I'm Akshara and you're watching me on Bollywood Now.